હવે સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ આપણે સુરતની તો સુરત શહેરના પાંડેસરા વિસ્તારમાં આવેલી મારુતિ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ નજીક એક ચોંકાવનારો બનાવ સામે આવ્યો છે। રોડની સાઈડમાંથી 500 રૂપિયાની સળગાવેલી ચલની નોટો મળી આવતા વિસ્તારમાં કુતૂહલ ફેલાયું હતું। મોટી સંખ્યામાં નોટોના કટકા બળેલી હાલતમાં પડેલા જોવા મળ્યા હતા। સ્થાનિકોએ ઘટના અંગે પોલીસને જાણ કરતા તંત્ર પણ દોડતું થયું હતું। हाल एक सौथी मोटो सवाल ए उभो थई रह्यो छे के आ सळगावेली नोटो रोड पर कोण नाखी गयुं अथवा तो कोईए जाणी जोईने सळगावी छे के नहीं। हवे समग्र मामले पोलीस द्वारा वधु तपास हाथ धरवामां आवी रही छे। ये नागसिम नगर पांडेसरा। क्या देखा है आपने? मैं घर पे खाना खा रहा था, मेरा चाचा आया बंगारा चुनने, तो उसने नोट देखा उधर पड़ा हुआ, तो घर पे आया, मुझे बोला कि भाई वहाँ पे नोट गिरी हुई तो कुछ काम का है नहीं है, देख ले। तो हम लोग आए, देखा तो नोट ओरिजिनल है और आधा जला हुआ था। तो मैं बोला ये कुछ काम का नहीं। एक जन से सलाह लिया तो उसने बोला भाई किसी का कुछ मर्डर फाडर कुछ हुआ होगा, ये चोरी चपाटी, तो तेरा नाम आएगा, एक तो पांडेसरा में जाके जमा कर दे और पूछ ले क्या हुआ है।